Hello dear students, welcome to the class today. So we are carrying on with the revision of this chapter 2, Nationalism in India, and a lot of things we have completed. Here I would like to mention that the topics that we are doing in this chapter, whatever points we have covered in this chapter, consider all those points as important, and consider that in these points, whatever informations are given can be asked for a 4 mark or a 5 marks question. Got it? Otherwise you have to be prepared with your 1 marks also. Multiple choice question, as you know that MCQ comes for 16 marks. 16 MCQs are coming. So for that purpose it needs to be clear, and all the points with certain names, dates, try to mention it in your answers. Yes, here I would like to mention that CPSE doesn't ask for dates. Got it? Even if you don't mention the dates, marks would be given as per the requirement. जितना चाहिए उतने नंबर आपको मिलेंगे. लेकिन still if you are aware, if you take care of these points, so it would be good for you. I mean, it could be good for your preparations. Got it? Then Lord Irwin को उन्होंने demand भेजा था. 11 demands were there in his letter, Gandhiji's letter, and he wanted that all the demands, all the requirements of the Indians should be fulfilled. Lekin Lord Irwin, who was the Governor General, who was the Viceroy at that time, he was not at all in a mood to accept the Indians' demand. The Lord Irwin had said that Indians, whatever be, Indians have to understand that British government is there, British rule is there. So whatever is the British wish, जैसा ब्रिटिश चाहते हैं वैसी ही चीजें इंडिया में होंगी. तो यहाँ से द नेक्स्ट स्ट्रगल हैड स्टार्टेड. 11 मार्च का टाइम इन्होंने दिया था, बट ब्रिटिशर्स व्हेन दे डिड नॉट पे अ हीड टू दैट, जब उन्होंने बिल्कुल भी उस चीज को नहीं सुना, तो गांधी जी डिसाइडेड कि नाउ द सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस would be launched on a very large scale. So what did he do? That civil disobedience movement was launched here. What was the process and how it has started? First we will be discussing about it. What is children? Purna Swaraj. We are talking about complete independence. We are talking about a time period when the movement had started. I mean, this was the second movement. Non-cooperation to failure ho gaya tha, but now Gandhi ji, with lot of planning, had started this movement with the hope that this movement would be successful. So Mahatma Gandhi has sent a letter. It was an ultimatum. So when Lord Irwin did not agree to it, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March. Salt March was started. कहाँ से? Definitely from Sabarmati Ashram. Ahmedabad. Nice place, beautiful place. Kafi and lot of informations. I just wanted to share it because I had seen that. तो कभी मौका मिलता है तो ज़रूर देखना गांधी ये साबरमती आश्रम, एंड जस्ट नियर द रिवर साबरमती. बहुत ही खूबसूरत जगह है ये. कोस्टल टाउन, गुजरात का कोस्टल टाउन था डांडी, वहाँ के लिए निकले, एंड 78 वॉलंटियर्स वर देयर. 78 वॉलंटियर्स, मतलब जिन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे. Accompanied to Dandi. Dandi was one of the major coastal towns of Gujarat. It was 240 miles from Sabarmati. Gandhi Ashram, okay, and now what happened कि महात्मा गांधी
You know, ये क्लास 12th की बुक से मैं आपको बता रही हूँ, I'm just sharing it with you that this was for the first time, ये पहली बार ऐसा हुआ था that a movement was getting an international attention. हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे इस मूवमेंट को देखा जा रहा था कि हाउ वन पर्सन हैज चैलेंज्ड द ब्रिटिशर्स एंड ही इज कैरिंग ऑन हिज मूवमेंट विद सो मच ऑफ फुल फोर्स. इतनी फोर्स के साथ वो इस मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. एंड द इंटरनेशनल प्रेस पीपल हैड कम टू कवर दिस डांडी मार्च. वो देखना चाहते थे कि व्हाट is the reaction of the people. They were amazed that so many people were supporting Mahatma Gandhi. This was this was something that was very astonishing for them. बहुत ही बड़ी चीज थी इनके लिए. So 240 miles था. So for 24 days the march continued. मतलब डांडी मार्च, ठीक है. मार्च मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डांडी मार्च. डांडी तक के लिए था ना, सो डांडी मार्च, ठीक है. 24 days 10 miles per day. बाबा कितना चलते थे ये ना. हाउ कुड ही वॉक एक दिन में पूरा 10 miles? माय गॉड. 1 mile में तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन 10 miles, thousands of people came to hear महात्मा गांधी. हजारों लोग आ रहे थे महात्मा गांधी को सुनने के लिए. wherever he stopped, जहां भी वो रुकते थे. नाइट हॉल्ट मीन्स 24 days चल रहे हैं, डेज में चल रहे हैं, नॉट एट नाइट. So at night, wherever was the halt, so many people came to meet him. And on 6th April, he reached Dandi. 6th April, he reached Dandi. Got it? So ये याद रखना है, ये याद रखना है, यहाँ याद रखना है. This you have to remember and this you have to remember. आप जब मैं कहती हूँ ना आपको many times ऐसे कि underline the important points, underline the important events. तो important कहती हूँ, अभी क्या करते हैं बच्चे, पूरा में underline, पूरे में लाइन दे देते हैं. ऐसा नहीं होता है. अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको लाइन देनी है. तो 6 अप्रैल को ही रीच डांडी. और यहाँ पे क्या था, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, नमक बनाना इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिशर्स. इफ एनी इंडियन इज ट्राइंग टू ले डाउन अ सॉल्ट फैक्ट्री, ही वॉज नॉट अलाउड. लाइसेंस ही नहीं मिलेगा. तो think how smart the British people were there, and think how nicely they were dominating the Indians. They were troubling the Indians. I'm using these words, I'm using these terminologies because that was the scene. यही चीज हो रही थी, बहुत गलत तरीके से हो रही थी. So इन्होंने कहा कि peacefully they have to defy the British, कि no where violence, non cooperation का बार बार he was giving example. Okay, and he was saying कि whatever mistakes had happened in non-cooperation के time पे Indians had lost patience. क्योंकि non-violence, to follow non-violence, lot of patience is needed. An impatient person cannot follow non-violence. Got it? तो 1921-22 में, बट ही ऑल्सो यहाँ पे क्या था, पहला वाला क्या था, इट वॉज जस्ट नॉन कोऑपरेशन. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी क्लियरली आस्क्ड इज हाउ इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. हाउ इज CDM डिफरेंट फ्रॉम NCM. अभी तो आप क्या करोगे, अपने बोर्ड के पेपर में ही लिखना CDM, NCM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. बिग एग यू विल गेट. डोंट डू इट चिल्ड्रन. ये शॉर्ट फॉर्म्स होता है जब हम आपस में डिस्कस करते हैं, दैट टाइम यू कैन यूज इट. बट व्हाइल यू आर राइटिंग, यू आर नॉट अलाउड टू राइट लाइक दिस. गॉट इट? सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हर जगह पे दे वर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ.
manufactured the salt, demonstrated in front of the government salt factories. Salt factories के सामने demonstration हो रहा है. The shops which were selling the British salt, British manufactured salt, ब्रिटिश कंपनीज में जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उन दुकानों के ऊपर भी हमला होता था. एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर वेरी कॉमन. ओके, एवरीथिंग दैट local made things and local made goods were only accepted. So local made salt was to be used. Got it. People demonstrated. They demonstrated in front of salt factories. Got it? ब्रिटिश की थी ना सॉल्ट फैक्ट्री, तो कोई इंडियन का था ही नहीं. देयर वाज नो सॉल्ट फैक्ट्री वेयर इंडियन वाज देयर. अ मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग. इसके साथ ही क्या हुआ, वन थिंग दैट वाज प्रोमिनेंट. अरे नमक कानून तो वहीं तोड़ेंगे ना जहां नमक बना सकते हैं. इट इज ऑलवेज नियर द सी. हम दिल्ली में नमक बना सकते हैं क्या? नो. सो वेयर द सी वाटर इज देयर, वहां पे सॉल्ट इज देयर. So many people said कि we also want to participate in the civil disobedience. So Gandhiji told them, then defy the government orders in a peaceful manner. कि जहां भी आपको मौका मिल रहा है गवर्नमेंट लॉज को ब्रेक कीजिए in a peaceful manner. His first aim was that the movement has to carry forward but peacefully. No violence at all. ठीक है, किसी भी तरह से वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना है. तो पीजेंट्स वे रिफ्यूजिंग. पीजेंट्स ने क्या किया, पहला जो कंट्रीब्यूशन होता था ना, एवरी टाइम द कंट्रीब्यूशन दैट वाज देयर एंथुजियास्टिकली द पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड. सो किसानों ने क्या किया कि हम टैक्स नहीं देंगे. पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस. गॉट इट? किसानों ने मना कर दिया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे. एंड फॉरेन क्लोथ्स वेयर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड. हाँ, मैं इसलिए आपको ये सब चीजें बता रही हूँ दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली एक्टिविटीज वेयर डन बाय द इंडियंस, हाउ डिड दे पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, सो फॉरेन क्लोथ्स वेयर बॉयकॉट. क्या क्या चीजें हुई थी? पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस. Common people, they refuse to wear the foreign clothes. So, foreign cloth was boycotted. Got it? And liquor shops were picketed. Liquor shops were picketed. तोड़ फोड़ करना. पिकेटेड का मतलब समझो, मतलब कि वायलेंस नहीं, जस्ट क्लोज कर देना है और शराब की बोतलें उठा के फेंक देनी है एंड ऑल दैट काइंड. तो अभी क्या हुआ, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू एंड द चौकीदारी टैक्स. गांव में क्या होता था ना, जो छोटे छोटे गांव होते थे वहां पे कभी कभी क्या होता था दैट देयर वेर सम इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट. चोरी वोरी की घटना हो जाती थी. तो while the theft used to occur, तो the Britishers had appointed some चौकीदार्स. गांव में उन्होंने क्या किया था ना, कुछ चौकीदार्स को अपॉइंट कर दिया था कि these were the चौकीदार्स जो कि अपॉइंट किया गया है. एंड these चौकीदार्स, आप लोगों को क्या करना है, इनको चौकीदारी टैक्स पे करना है. यू हैव टू पे द चौकीदारी टैक्स. पीपल सेड कि वी डोंट नीड द चौकीदार्स, आप क्यों, हम टैक्स क्यों पे करें, प्लीज रिमूव दिस चौकीदार्स फ्रॉम हियर. तो चौकीदारी टैक्स, liquor shops were picketed and refused, matlab the people, villagers refused to pay chowkidari tax. Now what happened?
village officials, they resigned, and many places forest people violated the forest laws. Okay, this is very important. क्या है, the people who were living in the forest, ये तो आपने बता दिया, आपको अंडरलाइन भी करवा दिया. Forest people, remember the Alluri Sitaram Raju? Yes, उन्होंने जो मशाल जलाई थी, मतलब नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो लोगों को इंस्पायर किया था, नाउ इट वाज बीइंग कैरिड ऑन फॉरवर्ड. ओके, सो फॉरेस्ट पीपल ब्रोक फॉरेस्ट लॉज. फॉरेस्ट लॉज आपको पता है, नोबडी वाज अलाउड टू एंटर इन द फॉरेस्ट. हाँ, यस, nobody was allowed to enter in the forest, and reserve forest, protected forest, village forest. Britishers had divided the forest into different categories. So these people said कि now the Indians, they have made up their mind कि ये जो Britishers के जो forest laws बने हुए हैं, इसको break करना है. This needs to be broken. They manufactured salt, forest laws, I'm sorry, and they started, because reserved forests were reserved forest. Nobody was allowed to enter in those forests. So reserved forest में entering and collecting the fuel wood. देखो उस समय CNG, LPG and all this was not there. खाना जो बनता था वो लकड़ी के चूल्हे पे लकड़ी पे बनता था. चूल्हा बना के उसमें लकड़ी जला के उसी पे खाना बनता था. तो if the village people are not allowed to go to the forest and collect the firewood, हाँ, खाना कैसे बनेगा? Got it? So they went to the reserve forest and they collected the wood and grazing the cattle. ठीक है, कैटल को ग्रेज करवाना है, ये सब चीजें इनको मना कर दी. गाय बैल, गाय भेड़ बकरी, दूध भी तो होता था इनका दूध भी इस्तेमाल करना है. सो नाउ व्हाट हैपेंड कि फॉरेस्ट लॉज, पीपल ब्रोक द फॉरेस्ट लॉज एंड एंटर्ड द फॉरेस्ट. ऑल द प्लेसेस जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने रोक लगाई थी, all the places which were stopped by the Britishers, that nobody can enter in these places, उन सारी जगहों पे जो है इंडियंस घुस रहे थे. Indians were entering into all these places which were banned and which were stopped. Now that ये जो सारी developments हो रही थी, all these developments that were happening, colonial government began arresting the Congress leaders one by one. चुप थोड़ी बैठेंगे. ब्रिटिशर्स हैं, इतने लार्ज स्केल में उनके सामने द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट, पोजिंग अ चैलेंज, तो चुप बैठेंगे क्या? नो, दे वर नॉट टू बी क्वाइट बाय एनी मीन्स. तो देयर वर वायलेंट क्लैशेस एट मेनी प्लेसेस. पुलिस और आम आदमी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी. So what happened? Khan Abdul Ghaffar Khan was there, a devout disciple of Mahatma Gandhi. अब इसको समझो, ठीक है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका सबसे पहला मूव यही था. ब्रिटिश गवर्नमेंट started arresting कांग्रेस लीडर्स. सबसे पहला उनका था कि ये जो लीडर्स हैं, जो लोगों को लीड कर रहे हैं, इनको अरेस्ट कर लो तो आधा मूवमेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा. गॉट इट? दे सेड कि लेट्स अरेस्ट द लीडर्स एंड पुट देम बिहाइंड द बार्स. इनको बंद कर देंगे तो सारा मूवमेंट जो है वो स्टैंड स्टिल आ जाएगा. तो कभी कभी क्या हुआ, देर वेर वही चीज है, बार बार लोगों की सब्र का बांध टूट गया था. And people had enough of patience. So many times it was happening that people were losing the patience. Okay, and there were violent clashes. किसके बीच में? अरे violent clashes between British and Indians.
पुलिस और आम आदमी के बीच में जहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस आ जाती थी। तो इनका काफ़ी हॉट डिबेट होता था। देयर वर हॉट डिस्कशंस ऑफ द पीपल विद द पुलिस। पुलिस भी कौन थे? हु वर दिस पुलिसमैन? दे वर आल्सो इंडियंस ओनली। वो देख रहे थे, दे कुड सी द काइंड ऑफ एट्रोसिटीज दैट वाज बीइंग डन ऑन द इंडियंस। तो वो देखो डायरेक्टली तो वही वही ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से तनख्वाह ले रहे हैं, तो दे वुड बी विद द ब्रिटिश ओनली। लेकिन ओपनली ये जो है ब्रिटिशर्स के होते थे, लेकिन छुप छुप के इंडियंस की भी मदद करते थे। एवरीवेयर इट वाज नॉट देयर। सम पीपल वेर वेरी लॉयल इंडियंस, यू नो ना, व्हेन दे work with full dedication and full sense of belongingness. तो ये इंडियंस का एक नेचर होता है। गॉट इट? सो खान अब्दुल गफ्फार खान अब एक डिवाउट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। ओके, खान अब्दुल गफ्फार खान मतलब उनका फॉलोअर थे, गुरु माना था उन्होंने, अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। गॉट इट? तो ही वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। अप्रैल में ना इनको अरेस्ट किया पुलिस ने। लोग, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर। Where? Yes, he was a very popular leader in Peshawar. Lot of cars were there, जहाँ पे कि हथियार बंद गाड़ियाँ थी, हथियार से लैस गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, बट पीपल were there in front कि आप हमारे ऊपर गोलियाँ चला दो, but we will oppose and आप please just leave our leader, popular leader बाबा, खान बाबा उनको लोग कहते थे, खान बाबा को छोड़ दो। So he was arrested। कब अरेस्ट हुए थे? ऑन अप्रैल 1930 and people protested in Peshawar। So अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में दिस प्लेस इज स्टिल देयर। गॉट इट? पेशावर में लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया एंड पुलिस फायरिंग वेयर देयर, मेनी पीपल वेयर किल्ड एंड दिस पीपल प्रोटेस्टेड इन पेशावर एंड इतने पॉपुलर थे कि लोगों ने इनके लिए अपनी जान दे दी। मेनी पीपल वेयर किल्ड। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडियंस ने नॉन वायलेंस की कसम खाई थी, ब्रिटिशर्स ने थोड़ी खाई थी। ब्रिटिशर्स वे वेरी मच विद द वायलेंस। उनको था कि जहां भी होगा, जैसे भी होगा, दे विल स्टॉप दिस नॉनसेंस। दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम द इंडियन साइड। whatever the Indians whatever movement the Indians were carrying on, they were saying कि अगर इसको नहीं रोका गया तो they are going to clamp on them। okay, and एक महीने के बाद महात्मा गांधी himself was arrested। okay, in May 1930 गांधी जी was arrested। उन्होंने कहा कि अब इन्हीं को अरेस्ट करो सबसे पहले। Got it? गांधी जी को इन्होंने अरेस्ट किया एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स वेर देयर शोलापुर में। दे अटैक द पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन। अब क्या हो गया? द इंडस्ट्रियल वर्कर्स हु वेर देयर, द पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, दे ऑल्सो वेर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। ऑल दीज जितना कुछ भी था, ठीक है, इनका मेन एम था दैट टू स्टॉप द ब्रिटिश वर्किंग। ब्रिटिशर्स के काम को रोकना है, ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को डिफाई करना है, एंड दैट वुड बी इन अ रियल सेंस कॉल्ड एज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो डिसोबीडियंस की बात है, मतलब डिसोबीडियंस मीन्स बात नहीं मानना। एक होता है कि नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि नॉन कोऑपरेट करना,
हम नहीं जाएंगे, अपने घरों में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, ओपनली अपोजिंग, ओपनली इन्होंने क्या किया कि दे वुड बी अपोजिंग। एंड महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर, महाराष्ट्र में है, ठीक है, शोलापुर अटैक्ड, क्या किया ना इन्होंने, दे अटैक्ड ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ये सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशंस, यहाँ सब गवर्नमेंट अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ओके, अब क्या हो गया कि ऑल स्ट्रक्चर्स एवरीवेयर विच वॉज सिंबलाइजिंग द ब्रिटिश रूल, विच वॉज शोइंग द ब्रिटिश रूल, अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट, what did they do? They were repressing this thing very brutally. ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है बहुत ही क्रूअल हो गए थे। अब नाउ दे सेड कि दे हैव टू स्टॉप दिस मूवमेंट, ना ये ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। सो पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड, क्योंकि नॉन वायलेंस था, आई एम टेलिंग यू कंटिन्यूअसली, पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड and men, women, children were arrested। अभी एक चीज देखो, बच्चों का क्या काम है, बच्चों का काम है कि भैया आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन they were also arrested, beaten, attacked, and about 1 lakh people were arrested, ठीक है, around 1 lakh people were arrested। Got it? 1 लाख लोगों को अरेस्ट करके और जेल में बंद कर दिया है। इसके बाद भी जेलों के बाहर लाइन लगी रहती थी। या इज समथिंग वेरी फनी, बट दैट्स द रियलिटी माय डियर चिल्ड्रन, कि देयर वेर आई मीन क्यूज एंड क्यूज ऑफ पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड द जेल, प्लीज अरेस्ट अस, वी ऑल्सो वांट टू गेट अरेस्टेड, हम सत्याग्रही हैं, हमको अब इंडिया को फ्री करवाना है, सो दिस वाज देयर। तो अभी दिस मूवमेंट वाज एट सच अ पीक and Britishers were so disturbed that they did not find and they did not understand how to meet such a grave situation। इस तरह की सिचुएशन में कैसे डील करना है। अचानक महात्मा गांधी ने क्या किया, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। उन्होंने कहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देते हैं। क्यों? दिस आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉट इट चिल्ड्रन? So 2-3 things from your book, I'll just make you mark. Rest we'll be discussing in the next class. Got it, children? So students, we have completed the topic today. We are doing with the civil disobedience movement. We have done. Every time I show you these pictures, as you know, I had already told you that pictographic questions are also important. For that purpose, you need to understand, you need to know about these pictures. ये एक पिक्चर दिया हुआ है, फिगर 6। दिस इज अबाउट द मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में कांग्रेस लीडर्स की मीटिंग हुई थी 1931 में, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, डांडी मार्च शुरू हो गया था। एंड इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू एंड नेहरू फैमिली बिलोंग टू इलाहाबाद, आई होप यू ऑल नो दैट। यस, तो इंदिरा गांधी एंड ऑल दिस पीपल, ये इनके घर पे ही ये मीटिंग हो रही थी जवाहरलाल नेहरू के यहाँ। इसमें लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर्स आर देयर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऑल दीज लीडर्स आर मैंशनड हियर। आप ये देख लेना, बस यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी। वन थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू। अनदर थिंग इज दैट इंडिपेंडेंस डे प्लेज तो वी हैव ऑलरेडी सीन। Now Gandhi ji during the salt march,
Just check out this much. These are some why we need to understand and why we need to know about these pictures. These are some of the original pictures, my dear children. ओरिजिनल पिक्चर्स टेकन एट दैट टाइम, इसको देख के ही मूवीज बनती हैं, गांधी जी का अपीयरेंस एंड ऑल दैट. सो दिस वाज ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च. महात्मा गांधी along with his 78 volunteers, they were joined by thousands. ठीक है. And this is how satyagrahis were dealt in 1930. So just look, I wanted to show you, look at the mass. आप ये भीड़ देखो. Look at the crowd which was crazy to help Gandhiji and to participate in the non-cooperation movement. इतने लार्ज स्केल पे ये काम हो रहा है, so you can understand what would have been the need of this movement. So yes, this is what I wanted to show you, children. So here I'm ending. Go through the video and we'll discuss the further things tomorrow in the next video. Thank you so much and all the best to you.